नमस्कार। आप सभी का इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी की आयुष समृद्धि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सीरीज के 2075th माइलस्टोन पर स्वागत। We would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society's AYUSH SAMRIDDHI International Conference Series at 2075 milestone. First of all, I would like to communicate my sincere thanks and regards to all of you, especially to Professor Kamini Dhiman, whose inspiration has motivated us to conduct two series, infertility series and women wellness series. So on today's topic, SutikA ParicharyA in women wellness series, we would like to welcome Professor Kamini Dhimanji, Dr. Beena Rose, PK, retired principal, professor and HOD in Vedyaratnam PS Warrior Ayurved College, Kolkata, Dr. Nidhi Sharma, medical officer, Ayurved Dispensary, Fatehpur. So all are welcome here. Our pillars, Professor V.K. Agnihotri sir, Pradam sir, and to all expert of the dais. Without wasting much time, I would like to invite Professor V.K. Agnihotri sir for his blessings. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. Thank you so much. I welcome all the guest speakers of today's webinar and also all the dignitaries who have joined our platform on 2075 number webinar series based on the topic SutikA ParicharyA under the guidance of Professor Kamini Diwan ma'am. We are grateful enough for her contribution and also for providing the great speakers related with their own selected topics. So it is always a learning for us all and also enhancement of knowledge by their coordination and by their cooperation. So just I welcome Professor Kamini Manji, Professor Halina Roseji, and also Dr. Nidhi Sharmaji. These two are our guest speakers, and Madam Kamini Dhimanji will be a coordinator and moderator, and every whole conduction of the program will be managed around to her. So I putting our all gratefulness, I extend our welcome to all the guest speakers, our dignitaries, and also those who have joined our webinar through YouTube. Thank you so much, and over to Professor Pawan Sharma. Namaskar. Thank you, sir. I would like to invite Professor Kamini Dhimanji. Welcome, madam. Now stage is yours. जी नमस्कार पवन सर, अग्निहोत्री सर, Beena madam, a long awaited lecture. We were waiting for you, madam, since 2-3 months that to get your time for this webinar, and at last you have given us time. Thank you, madam, for joining us and enlightening you, or our participants will be enlightened with your research and with your lecture. You have done very good work in this SutikA ParicharyA field. So welcome you, madam. And I would like to welcome all the participants today. And अभी और जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे. तो मुझे लगता है मैडम को सुन के सबको लगेगा कि हाँ ये मैं लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए था. मैडम ने इसका बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है सुतिका के फील्ड में. तो मैडम का बहुत बहुत स्वागत है. And madam, over to you. You can share your presentation if you have prepared. Yeah. Beena madam. Yeah. Come on. आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं बीना मैडम. योर वीडियो इज ऑफ, आई होप. Okay. Okay, sir. Your screen is visible. Yeah. Okay. Welcome, 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 madam. Welcome. Thank you, sir. Is it visible, sir?
Yes, oh, your screen. Yeah. Yes, excellent, excellent. Great. Yeah. Respected Kamini Madam and Dr. Pavan Sharma sir and Dr. Kulkarni sir and other doctors from various parts of India. Namaste to all. My topic is traditional postnatal care Ayurveda Kerala. I am very much thankful to Dr. Kamini Madam because from my topic, my PhD topic is SutikA, ParicharyA across Kerala. Traditional postnatal care and the classical postnatal care. It is a survey study and survey from 3 areas, from doctors, from postnatal mothers, and the care, the SutikA care which they are given to SutikA. So from the starting my study, all these study started from the tradition knowledge, to collect the tradition knowledge and compare with the classical postnatal care. Once again, I am my thanks to all the dignitaries. Shall we start? Yes, madam. Yes, yes. Yes. So coming to reproductive health management, and the charya includes the Ridhumadi charya, Artava charya, Garphapurva charya, and Garphini charya, Sri Roga, and the SutikA charya. These are the charyas mentioned in our classics. So this is a picture. It mentioned, or it gives the importance of SutikA charya in Ayurveda. So the need and the significance of the postnatal care, Ayurveda mentioned the Garphavritti Prasava Kleda Asvasruti Pidanehi, and another quotation Pravahana Vedana Kledana Rektani Srudi Vishesha Shunya Sharira Tvacha Visheshadohi Shunya Sharira Striya Prajada Bhavandi. These two quotations indicates or points the importance of SutikA Paricharya. So these are the terms: the Garbhavritti, Prasava Klesha, Kleda Srudi, Rektakshaya, Agnimandya, Shunya Shariratva, and Stanya Pravarti, and Yoni Vrana. These are the terms which mentioned in that aspect. So all of you know the SutikA Paricharya benefits, because the SutikA becomes weak or emaciated due to the development of the fetus, and also an empty body due to unsteadiness, labor, and excretion of kleda and blood. With the classical management, she attains her Sharira Bala and reaches her pre-pregnancy state. The drugs which are used early weeks after delivery are Divana Padina, and it will correct the Agni and help to promote the Sanya Ulpadana. That is also the Pakwa Ahara Nimitaja. So diet is very important in SutikA Parijarna. Coming to traditional medicine, I'm comparing the traditional SutikA Parijarna and the classical SutikA Parijarna. So all of you know the traditional medicine, the definition of traditional medicine is the total of the knowledge and the skills practices based on the theories, beliefs, and experiences. And these are the prevention, diagnosis, and improvement or treatment of physical and mental illnesses. But coming to traditional postnatal care is continuing with the diverse and specific top medicine knowledge. It is based on Ayurveda and folk medicine. So in traditional postnatal care, the diet and the medicine and the experience of the
elderly peoples, and also the SutikA Parijarna is important in case of traditional postnatal care and specific folk medicine knowledge. It is based on Ayurveda and folk medicine, and the traditional health practitioners and midwives propagate these traditions. These traditional practitioners are very common in Kerala, and it is very different in place to place. And the southern region it is different, and northern region it is very different. In northern region, the medicines are very much included in the traditional postnatal care, and also the coming to diet aspect, it is very rich. The practitioners and midwives propagate these traditions, that is medicinal plant preparations and tradition food types. Because in after postnatal care, they want to get up the total weight of the body. That is the only aim of the postnatal care. Apart from the treatment aspect, the weight gaining is very important in the traditional postnatal care. So the main advantage of are to improve the muscle tone, to minimize the risk and to minimize the risk of peripheral venous thrombosis by promoting arterial circulation and preventing venous stasis, and it prevents backache and controls prolapse and stress incontinence. And the definition of periperium, all of you know, the 6 weeks following pregnancy, during which the pelvic organs return to pre-pregnant state, both anatomically and physiologically. So, and in Ayurveda, the SutikA definition, a woman who has just given birth to a child followed by expulsion of placenta is called as SutikA. If placenta is not expelled, the woman cannot be called SutikA Parijarna. So the classical and the traditional postnatal care started after coming from the hospital. The SutikA Kala, it is 45 days, or Punaravartana Darshana. Punarartava Darshana. The care included in perpurium. So these are the same in all the classical and the traditional postnatal care, the immediate care, neonatal care, involution of the uterus, care of bladder, care of bowel, proper diet, sleep and rest and exercise, and early ambulation. These are the care included in the perpurium. So, and in addition to these, the SutikA should know these points: the care of the baby and the breastfeeding, and the need of the care, and the self-care of the SutikA, and the hygiene of the SutikA, and nutrition, and the contraceptive measures. So this indicates, or this points out the importance of SutikA, where the SutikA Parijarna is in a proper way, or in an improper way, the SutikA Angamarda, Jara Kamba Pibaso, Guru Gatra, Shodaga, Shula, Disarocha, SutikA Rogalakshana. And another one, the Jara Disara Shodacha, Shula Anaha Belachaya, Tandra Rijiprasegadya, Kapavadamayotpaga. So these are the Kritra Sadhya Lakshanam Hite Roga, Hina Mamsa, Belam Agni. This is the very good point, or the Shina Mamsa, Bela Agnida. Te Sarve SutikA Namna Rogaste Chapi Udravaha. So the aim of the postnatal care is internally to restore the strength and the health of the mother, to accelerate the involution of the uterus, to improve immunity, and to prevent infection, and to improve lactation. Internally, so the medicine, and the externally to relieve the exhaustion of labor, to relieve the pain during labor, to heal laceration in the external genital organ, and to prevent infection. Then, so the Samanya Parijarna includes
the Jivaniya Brahmaniya Madhura Vadahara Siddhair Abhyanga Ulsadano Parishege Avagahana Annapana Vidhivir Visheshada Chobajare. These externally Parishega, this term is very important. Nowadays, all the in traditional postnatal care, the water, the temperature of the water, it is not maintained. So it is very good. But what Acharya says, the Parishega Avagahana Annapana. So Jivaniya Brahmaniya Madhura Vadahara Siddhair Abhyanga Ulsadana Parishega Avagahana Annapana. These are the Samanya. And along this, the Kashiva Samhita mentioned special Vishesha Parijarana according to Kula, Desha, Kala and Prakriti. The Anubadesha, the Angala Desha and Sadharana Desha. Manda with Agni, Bela, Vartaka Drevya, and Vihara Svedana is mentioned, and Ushna Drevya Sevana in Anubadesha, and Nivada Shayana is mentioned. And Jangara Desha, Sneha Upachara, and also internal Vihara also Sneha Upachara. And Sadharana Desha, neither two Sneha or Rusha Drevya are mentioned. So, management objectives in both the classical and traditional postnatal care, the basic things are the Dibana Pajana, Garphashaya, Koshta, Vishuddhi or Vranarobhana, Stanya Janana, Vadanilomana, Vadashamana, Rekta Pushti, Kleda Shoshana, Shula Prashamana, Stanya Varthaga, Brahmana, and Ashwasana. These are the management objectives in the Samanya Parijarana. So coming to Dibana Pajana, the classical, the postnatal care mentioned for Dibana Pajana, Panchagola Churnam along with the Sarpis, Taila or Masa or Majja. So Anupanam, Ushna Jalam, Ushna Gudodagam, Vam Jagari water to improve the digestion. The decoction of Lodra, Arjuna, Kadamba, Devadaru, Bijaka and Karkandu. And the Nagara and Haridagi Churna with the Jagari and the Nagara, Haridagi and Guda Sevana. These are mentioned in the classical postnatal care in Dibana or Dibana Pajana. And Dibana Pajana, we can give 3 to 7 days. And the common drugs are Panchagola Churna, Panchagola Asava we can give, Deepika Churnam, Ardragam and honey, and Tippali Kashayam. And in Kerala, one Kurunji Kodamba we are giving Kurunji Kodamba a preparation, traditional a combination, and then Vaishwandra Churnam and Pulilehyam, that is also a traditional combination, that is the Ayurveda prepared the Pulilehyam. It is in a powder form, and Shundi and with the Guda. These are the drugs we can give for Dibana and Pajana. And the Vadanlomana, next 7 days, we can give Lekhu Panjamula Churnam or Kashaya with the Vadahara Ushada. And Snehavana according to Sadhya, Anupanam, Manda, and Yavagupanam, liquid gruel of rice, medicated with the Panjagola Churnam. So, Vadanlomana, for Vadanlomana, we can give the Deshamula Kadatrayam Kashayam and the Dhanundaram Kashayam, Nadi Marma Kashayam. It is a traditional combination. It gives so many Nadi Marma Kashaya yogas are there. One Kashaya, 84 drugs are mentioned, and the main basic is Dhanundaram Kashaya along with the other drugs. That is the Nadi Marma Kashaya. And the Mukudi Kashaya, that is also a traditional yoga mentioned in northern Kerala, but it is a good preparation. Mukudi Kashaya, it is for the Vada. Instead of Vadanilomana, we can give the Mukudi Kashayam for Dibana Padana also. And that is mentioned in later slide. The Dhanandaram, 101 Avarti, and Dhanandaram Guliga, and Indugandham Kashayam,
Jeeragarishtam, Dashamoolarishtam, Dashamoolam Kashayam, and Abhayarishtam, Gandharva Hastadi Kashayam. We can give these yogas, any one of these drugs, according to the condition of the patient and the prakriti of the patient. Gandharva Hastadi Kashayam also we can give for the Anlomanata. Gandharvasta Chirilla Hudasha Vishwa Patya Purandavaya Vatsha Bhumidhalagehi, because the Kashaya gives for very good for constipation along with the any Anupana. So Gandharva, Garbhasya Vishuddhi, these are the common traditional drugs. That is Ulli means Palandu. The Uluva means Medhiga, and there is so many preparations are there with the Palandu and Medhiga, and that is Ulli Lehyam and Uluva Lehyam, that is Medhiga Lehyam, and Uluva Kurambu, that is also a just like a Lehyam, but Jeeraga Kuramba, that is also a Lehya Prashan Jeera with the Jeera, and Pulim Kuramba, that is also in a traditional preparation for Divana Padana and Garpasya Vishuddhi. And Tengin Pukala means the inflorescence of the Kera, that is for Rasayana, and the Shadavari Gulam, and the Arishta preparations, and Panjajira Gulam, and the Mukudi preparations, that is for Garpasya Vishuddhi. In and Kleda Shoshana, Shula Prashamana, we can give Yavachara, Panjagolasava, Ashogarishta, Marija, Ajamodaga, Jeeraga, and the Ilakurukal. That is the traditional preparation. That is a porridge preparation with the single drugs. Any one of a single drug, we can use only one drug or 1 to 3 drugs in a day, and along with the other medicated combinations, and Dashamoolarishtam and Hingvashtaka Churna. And in Stanya Janana and Vidaryadi Kashayam, Evago with the Medhiga and coconut milk, and Evago with the Jeera and coconut milk, Jeera Garishtam, Panjajeera Guda, Saubhagya Shundi Modaga, and soup, it is very important, soup of Eva, Godhuma, Shashtiga, and use of Leshuna and small fishes. If they taking non-veg, so they can take small fishes, Evago with the coconut milk. And this is a very famous drug combination, that is Koli Marina. That is the combination is prepared with the small chicken, the Mamsarasa soup, and the Panjajiraga Guda. And Stanya Janana, we can give combination of drugs or prepared drug, classical prepared drugs, Shadavari Churnam with the milk, and Vidaryadi Lehyam, Jeevandi Palkashayam, Shadavari Palkashayam, Jeevandi Kagoli Medade, Murgavashavan, that yoga, Jeevandi Palkashayam, and Shadavari Palkashayam, Shira Kashayam, Shadavari Jeevandi Shira Kashayam, Shadavari Shira Kashayam, and Stanya Janna Rasana. That is a common combination prepared by the Ayurveda Shala, that is Stanya Janna Kashayam, Stanya Janna Rasana. So the basic procedures we are giving, the Abhyanga, Mrudu Abhyanga, Lebana, and Veduguli, that is the medicated bathing, and Udara Veshtana, and so the Ilakiri, the kiri with the leaves, and also other drugs are included, and the Podikiri, that is Churna Sevedana, and Thara, Shirodhara, Udvartanam, Dhanyamla Dhara, and Dhumana according to the condition. Parishegam or Veduguli or Parishegam, the bathing with the boiled water. The Nalpamara, that Plasha, Ashuddha, Negrodhi, that Parandi, Maricha, any one of drugs they can take. The available drugs they can take. The Gurujamanja, Haribunja, and the Adulam, and Sushavi, Erandam, Ghanavalli, Panasam,
that is Kalpavriksha, Chinja, and Nimba, Vasha. These drugs are used for boiling the water for the bathing. These are the very interesting preparation, that is Kurukumarana, that is the medicated porridge. So many drugs are used, so many single drugs are using, leaves are using, and also the seeds are using, the methiga, jeera, and ajamoda, shadapushpa. These drugs are also using in the for the preparation of the medicated porridge. That is in the northern Kerala, the single drugs, the seeds are the ajamoda, jeera, and medhya. These drugs are commonly using. But in southern Kerala, the leaves are more using. These are. This is a medicated porridge. Medicated porridge is a nutraceutical type in the form of medicine using in postnatal care, mainly in southern Kerala. And in northern Kerala, powder form they are using. The medicated porridge prepared with the palm jaggery and Borassus flabular and the rice powder, maintaining the consistency, the rice powder, small portion of rice powder they are using, and the coconut milk and cow's ghee, and make a paste with one of these drugs and add rice powder, coconut milk, palm jaggery, cow's ghee, and cook well to make porridge. All of you know the palm jaggery is consists of iron content. So it's good for early days of postnatal care. The single drugs in southern Kerala, these drugs are using. In North Kerala, these drugs are jeera, amodaga, chadaguppa, and these drugs are using. These are the drugs. Coming to these drugs, the Medhiga or Uluva, Shidavirya, Kadushna, Deepana, Arojagahara, Deeptigara, and Vada Shamana. And the main combination, the drugs are Vada and Lomanam, Mutralam, Shobhagaram, Bellium, Medoharam, Brishyam, Stannijanagam, and Rasayanam. So they are using the boiled, the Medhiga, the water boiled with the Medhiga, and the gruel prepared with the Medhiga, and the boiled rice, and then other lehya preparations are mentioned. So Sanyavartana, boiled rice with the Medhiga, and the lehya preparations are given. And Vada and Lomanam and anemia, the porridge preparations are very good using. And the other Medhiga preparations are the porridge preparation, that is Vada and Lomanam Shobhagaram, and other one is Uluva Vilaichadu. That is also a lehya, a type of lehya preparation, that is boiled, fried in ghee, and also some other drugs, and Stanyavarthaga, and that is included in other yoga in Pukula lehya, that is in the Kera inflorescence, Vada Pitta Shamanam, Prameharam, Vastichodhanam, and Vrishyam. And also Palandu Lehyam, that also include Medhiga, Garphashe Shodhanam. Another famous yoga is used in nowadays also, that is in Kozhimar in the northern Kerala. That is Kozhi means chicken. That is also Marina means medicines. That is a small, the medicines prepared with a small chick, and it is for Bellium and Vrishyam. That is Medhiga. In that combination also Medhiga is included. Then, and another large combination of Petu Lehyam. Petu means delivery. So Petu Lehyam, after delivery, the Lehya preparation they are giving, the Petu Lehyam, that is Tanyavarthagam, Garphasya Shodhanam, and Vada Shamana. And Tengin Pugula Lehyam, that is also made with the inflorescence, and the Rekta Stambanam, Bellium, and the Kadishula, and the Shweta Pradharam. These are the common Medhiga preparations we are using in the
Kerala traditional postnatal care. Then Jeera. Jeera is, all of you know, the Deepana, Garbhashya, Shuddhi, Stanya Varthagam, and Stanya Shodhagam. That is also, apart from this, it is carminative, stimulant, antiseptic, and anti-hypertensive property. So, gruel prepared with the jeera and rice prepared with the jeera and the churnam, jeera churnam and jeera boiled in milk and also medicine gruel. Other drugs are also included in the medicine gruel. Jeera along with the jeera and other drugs are also used. Tippali and also black pepper. These are giving for not only for Stanya Varthana and for Deepana Padana, they are using. And Ajamoda, Trichospemum ammi. That is Shula, Atmana, Arojaga, Vadashamana, Bharapradam, Rekta Shodhaga. These drugs are nowadays also, these are very much using in postnatal care in the along with the classical postnatal care under the guidance of the doctor. Ajamoda is rich in fiber and antioxidant, so it improves digestion and helps in reducing weight and cleaning the uterus and stomach and the excessive and stop the excessive bleeding. So Ajamoda is good for the postnatal care. And coming to Shadapushpa, and it is consists of fiber, copper, phosphorus, vitamin, and these are the which is beneficial to maintain the overall health. So they consist milk in postnatal, flow of milk in promotes the flow of milk in postnatal mothers, and also it stimulates the appetite, relieve gas, and bloating. So Shadapushpa, they are giving Shadapushpa Churna for 3 days to 5 days in the second week of delivery. And the Nimba, Aryavepa, that is Resa, Tikta, Gunam, Lekhu, Snitam, Viryam, Ushnam, Vipaga, internal as Kalka. They are giving in the Nimba as Kalka, external in boiled water for bathing, Vedvalla. Boiled blood purifier and oral health, antioxidant properties, and increase immunity. And this is the Tengen Pukula. Tengen Pukula Rasana, that is the inflorescence of the Kera, and the Tengen Pukula Lehium, and the Swarasa. Swarasa is given in the second week of postnatal period, and the Tengen Pukula Rasanam, it is after delivery, 21 days after delivery, we can give to 3 weeks or according to the condition for bleeding, LBA, Stanya Varthana, and to decrease the fatigue. And the Haridra. Haridra is internally, we are using internally and externally. And the Tiktam, Kadu, Gunam, Lekhu, Jusham, the Manjal Kurka, that is the porridge. The Haridra Kurka is the major combination or preparation. That is, Kurka means porridge preparation. External with the coconut oil externally, and internally the porridge preparation is very important. And the Allium Sipa, the Palandu, that is cough related, cough and related respiratory problems and antispasmodic. So Vadashamanam, Mutralam, Medoharam, Gulmaharam, Arthava, Arthagam. So these are the main combination, that is the Lehya preparation and the rice preparation and the fry in ghee, and also the Palandu with the dates and making Lehya. They are giving the third week of postnatal period. So dates are also very important in including the diet in the postnatal period, because good source of many nutrients including iron, dates, Lehya, and fry also they are giving in
ghee, relieving the symptoms of constipation. So this is the Elephantococcus scaber is the main drug we are using in the postnatal care, in the traditional postnatal care, making porridge. That is the kurkumaruna, that is the porridge. And this is anachodi. And another drug, biophyton sensitive, that is the mukuti, that is the recta stambana. So we are giving after third week, we are giving the mukuti in the as a single drug, or cold preparation, or other swarasa we are giving, or kalka we are giving, or porridge. And this is a very good drug. It is a traditional drug, canthium. It is astringent, wound healing property. It is very tasty drug. The small leaves are very tasty. So we are making porridge with these leaves of canthium. So wound healing, the kashaya madhuram and ushnam. And that is also we are using, that is the Thespesia populina. This is the traditional drug. Traditionally, we are making food preparations with the leaves, and this is for the dysentery and hemorrhoid, skin disease, and anti-inflammatory. That is the Puvarisha or Thespesia populina. And this is also Tirunali we are using for the Sarasa or Kalka. We are giving for diuretic and Vishagara property. This is a very popular drug, that is the Veliparitila, and this Pergularia extensa, that is a synonym for Marma Akhada. So to relieving the pain and also other conditions or edema, so we are giving these leaves of this Pergularia drug. And Sisambelos also, the Maladangi, this is the drug for Udara Shulaknam. That is also making porridge, Vrishyam, Stanyajannam, and Adisaragnam. And this is Lucas aspera, and or other Lucas thailanica also we are using, helps to clean the uterus after delivery. The Swarasa is using in very commonly a mild fever. Mimosa also we are using to Recta stambana. This is a common drug, traditional drug, that is the Spermacohispida, that is the commonly name is Vedana Stavana, and Vadahara, Shodhahara, Gulmahara, Vadanilomana, Amavadahara, Rasayana property. So the rice gruel is prepared with these drugs. Some of the drugs are taken as samula. And this is also, these drugs also, they are giving mainly in northern Kerala for rice prepared with this drug for 3 days. The leaves are pounded and soaked in the warm water and the liquid drunk to treat the stomach diseases. And Asima tetracantha, this is also a magical medicine for cough and grind, boiled in bunch plant with the rice powder. And this is also very common in postnatal care. This is for boiling water for bathing. Nirgundi. And also this is for and the Ashale. This is for internally we are using, enhances breast milk production and regulating menstruation and calcium. This is also we are using for urinary disorders. Curcuma or coids from fresh tuberous root paste mixed with 1 glass of
cow's milk is taken orally to get relief from stomach pain after delivery. In this Abhamarga, the whole plant is ground, cooked, boiled in coconut oil and given 1 teaspoon 3 times daily for 5 days. So after delivery to get rid of the myth and in the home. And this is for making porridge. It is mainly used in the northern Kerala. That is Kurukka, means Pavatta Kurukka. This drug is Morinda coriander. And this mainly these are the main porridge preparations. That is Pavatta Kurukka and lehya prepared with a small onion and drona bushpi, onion and onion fried with the cow's milk, and lehya prepared with arranging petals of jaba, kusma, and also other drugs. These are the common porridge preparations, and among these, and 1 to 3 days, Yavago with less sneha and without salt, Ushnodaka Parishega with water. After digestion of sneha, after discharge from or after discharge from the hospital, we can give Yavago with less sneha and without salt, Ushnodaka Parishega with water, boiled with Vadahara Aushadas. With Vadahara Aushadas means the available drugs we can use. Pana with warm water, Dhumana with the Panchagandha Churna, Kushta, Agaru, Gulgulu, and Haridra. And external, we are using Abhyanga Snana in normal delivery from 4 to 5 days, and the LSES from 1 to 2 weeks. Dhanundaram Taila and Dhanundaram Kuramba, Dhanundaram Mukkut, and the traditional combination, and Pinda Taila, Balashubandadi Taila, Nalpamaradi Taila, and Eladi Kera Taila they are using. And for head Tila Tailam, Shuddha Bala, Shira Bala, Kera Tailam are using. And Abhyanga in Vada Prakriti or Vada Shamana, Dhanundaram Tailam, Dhanundaram Mukkota, Dhanundaram Kuramba, and Bala Shugandadi, Bala Tailam. We are using mainly, in Pitta, Pinda Tailam, and Kapha, Kotanjukadi, Pinyaga Tailam, also we are using. And external Lebana, Eladi Churnam, and the Haridra powder, green gram powder, and Nimba and tender Haridra also used for the Lebana. And the Thali. Thali means Thali is the shampoo which normally prepared from the leaves of red hibiscus and the Synodon dactyl, the Scotch grass, and the Cyclia peltata, and the Sida rombifolia, that is Bella, and the Vellia musandia. These drugs are mainly commonly used for the preparation of the shampoo or thali. And Udara Veshtana, we are using the long cotton cord or abdominal binders, prevents Visheshna Vada dosha and support to the back and the abdomen, and helps to straighten back after pregnancy and improving the posture. And the Yoni Dhumana, it is very important in the postnatal period. We are using Kushta, Agaru, Panchagandha Churna, Haridra, Vacha, and Neem. And coming to diet and starch-rich food used in the 4th, 5th, and 6th, and uliva rice, garlic rice, jeera rice, fried onion rice are mainly used, include in the diet chart, and egg, milk, banana, and dates, etc., and soup, goat soup, and the soup mentioned in the Rajeshma Chikitsa, Sadadimam Samalagam, that yoga is very good for in this condition. Fried rice powder, palm jaggery, and medicinal leaves, jeera, coconut, tila, etc. we can give. And this is one yoga mentioning Uluva Lehyam, that is fenugreek, roasted rice powder, turmeric powder, cumin seed, and mustard seed, and the coconut milk, salt, and jaggery. These are prepared, the lehya preparation. And another common yoga, Tengin Pukula lehya, that is the inflorescence of Kerala, and the Tengin Pukula, that is inflorescence
and the Kalka, Kashaya, and Sorasa. The three are making with the inflorescence, and Panam Kalkana, that is palm jaggery, and coconut milk, that is for Vada Pitta Shamana and Vasti Shodhanam and Vrishyam. And the Prasheva Churnam, Trigadu, Chadurjadam, that is Methiga, Jeera, and Ajamoda. It is also for a common. The benefit of Sudika Parijarna, the Garpavritti Shabda Shidila, Sarva Sharira Thadu Pravakana, Vedana, Kleda Rekta Nisrudi, Vishesha, Shunya Sharira Tvacha, Punarnavi Pavadi. So, this is the benefit of Sudika Parijarna. The abdominal belt after delivery, we can give, suggest this is also. This is good for abdominal belt after delivery. And the Mukkudi preparation. The Mukkudi is the common drug, traditional yoga in the Kerala. These are so many preparations are there. The Mukkudi means Mukkudi Kanyi. Mukkudi Kanyi means gruel. Mukkudi Kanyi, Mukkudi More. More means buttermilk. And Mukkudi is the term, the common name. But so many preparations are there. Kanyi and Mukkudi More means buttermilk, and Mukkudi Churnam and Mukkudi Marunna. That is the drugs. Drugs are prepared for the Mukkudi. And the Petu Mukkudi. Petu means delivery. And the Petu Mukkudi, the special yoga mentioned in the for the postnatal period, and the Petu Podi. That is a large yoga in the Petu Podi. That is also yoga and are the major formulations. And Arogya Kalpadruma, a text mentioned in the administration of Mukkudi in Udara, Arshasa, Grahani, Adisaram, Abasmaram, and Visarpa. Arogya Kalpadruma is mentioned in these contexts in Udara, Arshasa, Grahani, and Adisara, Abamarga, Visarpa. It is listed as a specialty of Kerala Balajigilsa. And like Padadi Mukkudi, Ardragadi Mukkudi, and Ajamodadi Mukkudi, and Punarnavadi Mukkudi, and is used as Mukkudi More or Takrayusha. The term is Takrayusha, and another form of preparation. Here the medicines are cooked in buttermilk and grated, then boiled in water. That is a main. The medicines are cooked in buttermilk and grated, then boiled in water. The Pramatya Kalpana is mentioned in Sharngadhara Samhita. All of you know Purvaganda. Sharngadhara Samhita Purvaganda. The Pramatya Kalpana is mentioned, and Takra Kalpana in Yoga Ratnagara. And traditional Kerala Vaidyas used Pramatya Kalpana as Mukkudi preparations. So in Pramatya, Dravya Kalka is boiled in water according to Chakravani. So Pramatya is Divana Padana. So in later, it is the Mukkudi is Divana Padana, and also we can use for other contest also we can use. The Mukkudi More. More means buttermilk. In these drugs are used in the Drona Pushpa Samulam and Tulasi and Vasha, tender leaves of mango trees and curry leaves and buttermilks. So these are prepared in buttermilk, that is we can give for Divana Padana. And Mukkudi Kanyi. Kanyi means gruel, and the Laja, Amalagi and buttermilk. These are mixed in the Kanyi for Deepana Padana. And the other drugs, Mukkudi rice or gruel rice, and Sashabam, buttermilk and ghee, and Saindava. Had written an article. It is a UGC approved journal. It is Mukkudi, a polyherbal combination of drugs used in traditional postnatal care in North Kerala, India. In this journal, Journal of Traditional and Folk Practices, Volume 9. This is the link. Mukkudi. Mukkudi is a very good combination and preparations in postnatal care. These are also in the special yogas in northern Kerala, the Mukkudi Marunna, Prasava Lehyam, and other
kashayam also they are using for northern Kerala. These drugs are also, these are the main yogas. Nowadays also they are using for the postnatal care. The special yogas in North Kerala, the lehya prepared with the palando after 2 weeks for 2 to 3 days. And also Tengin Pukuladi lehya, that is the inflorescence with inflorescence, lehya prepared with inflorescence, and it is from 31 days to 1 month. And also the lehya prepared with the methika also. The and diet we can give diet that is also incorporate our postnatal care. We can select from these any one of these drugs in the postnatal care, and egg or and also these drugs are and goat soup is very much important in the 3rd week to 4th week, and the small fishes and other drugs are also used. Okay. And special diets 9th day to 19th day, the powder of ajamoda, maricham, shundi and haridra made into paste with gingerly oil and add melted jaggery. That is a good combination for the 9th day to 19th day. And 20th day to 6th day, a powder of ajamoda and marijam, shundi, haridra, shadaku and jeeragam, and add jaggery powder and gingerly oil, make balls and given to postnatal mothers. So the classical postnatal care, how we select the drugs is very important. So under the guidance of a doctor, we can manage the postnatal mothers, or we can give care to the postnatal mothers with the help of the SutikA health workers or other massiers or the trained massiers. It is very important, or otherwise some mismanagement is going on. So it is the traditional postnatal care along with the classical postnatal care under the guidance of a doctor. It is very much important and very much efficient to retain the health of the mother into pre-pregnant state. Thank you. Thank you very much. Thank you, madam. It was really, we can say that knowledge increasing presentation. We were not aware about all these preparations you shared with us. It was really nice. But one doubt is you told about mukudi. Mukudi means what? That is not clear for me. What do you mean? What we can say that mukudi? Mukudi means a term, ma'am. But the term means the medicines prepared in the medicines cooked in buttermilk and grated, then boiled in water. That is a basic structure. One. Okay. And as other mukudi means a term. It is mentioned in the combination of drugs. Okay. 3 or other more drugs are included in the mukudi. There are so many combinations are there. Mukudi preparations in buttermilk or mukudi churnam is there, and mukudi medicines are included in prepared with the gruel, prepared in and mixed with the gruel rice combinations, and also some other drugs as mukudi marina as such. Because the medicines, mukudi preparations, the medicines are grinded and then only given buttermilk. Okay.
So many in my article, so many Mukudi combinations are I mentioned. So I'll go through that, and then if I'll have any doubt, I'll again call you and then ask you okay, about ma'am. that. Okay, Yeah, ma'am. about Thank that you. article. I'll read in detail the article, and Okay. then I'll discuss with you Okay, about ma'am. this. Thank you. Yeah, thank you, madam. We can take up the questions. Other speaker, I think she is having an issue with her network. She joined 2-3 times, but then gone. So we can make this session as open, and we can take up questions, or we can have discussion from other experts also. I saw Masambi also join, but when she has gone. If Masambi is there with other name, she can say something. She is also a very good orator. I've listened her. Masabi. She's not there. Ma'am, if you have got the phone number of Dr. Nidhi Sharma, you can नहीं, make फोन any नंबर effort तो to. है, मेरी बात ही, बट वो ये कि ज्वाइन नहीं हो पा रही, ज्वाइन हो रही फिर नेटवर्क चला जा रहा है, ऐसे कुछ बोल रही वो, है ना? हाँ, कुछ इश्यू है। We have got almost half an hour, तो मेरे को लगता है कि अगर वो ज्वाइन करे तो अपना 15 मिनट्स में कुछ इनपुट दे सकती है। हाँ, वो तो उसको उसमें दिक्कत आ रही है। मोबाइल डाटा से अगर जुड़ जाए किसी तरीके से, उनका हाँ, 2-3 प्रेजेंटेशन बार, तैयारी तो होगी। हाँ 2-3 बार उसने ट्राई तो करा, बट वो ज्वाइन होके निकल जाए, वो कुछ वहाँ 26 जनवरी का कुछ वो चल रहा है प्रोग्राम, तो उस वजह से। अच्छा, हाँ, तो उस वजह से ठीक है, ठीक। का मैडम कुछ। को तो बड़ा एक्सक्लूसिव रहा ना केरल साइड से, तो उनका हाँ, बिल्कुल अलग ही था हाँ, उसमें तो। या मैडम भी थोड़ा और हम लोगों के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए, आपके लिए, अय्या के लिए कुछ और सिंप्लीफाई करके थोड़ा 10 मिनट अपना बताइए। जैसे आपने जो मुकड़ी वाली बात की, मैंने भी नोट कर रखा था। मुझे तक्रयूश ऐसा कुछ अंडरस्टैंड किया, एक सेंटेंस उन्होंने बोला था कि थिंग्स विच आर प्रिपेयर्ड इन विद द बटर मिल्क एंड मे बी सेड एज यूश। मैम, इज इट सो? Yeah. She has written an Yes, article upon special, so I was very much anxious that क्या है ये ऐसा, Naturally, it's a new thing for us इसको also. नया है, उसको जानते हैं, हम भी अपने पेशेंट्स में यूज कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं कि मुकड़ी चीजें वही ऐसा। है, नाम का चेंज है ना, तो इसलिए थोड़ा उनसे और एलेबोरेट करा हाँ, लेंगे। हाँ, नाम Ma'am, if you are अलग है। comfortable, then you can, Professor Meena ma'am, if you are sorry. comfortable, you can 10 more minutes to elaborate something which is a little bit not much understandable to us, and you can simplify these things as far as the treatment part is concerned, because Sutika Prachaya for general Prasava is different, and Prasuta is different. And when the complications of any Sutika period, then it leads to something else, because sten che or lack of lactation, then it becomes a new treatment. And for a normal Sutika Pracharya, things are just normal as written in our text. So you can take a few minutes to just elaborate much more things. Madam, to Then, increase the stanya, and sometimes to stop that, anything we can have your view upon that. To Sanya, to stop Sanya. Yeah, in last to last webinar, somebody asked what can be done if because there the is. lack of baby, by any unfortunate situation, Yes, sir. we have to proceed toward that direction to stop the lactation. I am giving Varnadi Kashaya. Okay. And the external also we are giving some single drugs are we are using. And External what you are giving in those patients, like in case of IUD or something else, or surrogacy, some females are having breast milk, and that is to be stopped. Then so we are using, if the pain is there, we are giving the Rasnadi Churna in the external application. Okay. And Varnadi Kashaya and any Gurgulu preparations according to the patient, any Gurgulu preparation internally along with the Varnadi Kashaya. Okay.
sometimes pain is there. So in that condition, we are giving the Amrutarishta and along with the Punarnavasava. Yes, that is different thing, that there is a pain Yeah. and Yeah. pain is due to engorgement or pain is due to inflammation, then okay, we can give anti-inflammatory or this Yeah. antipyretic, like Amritarist is antipyretic and Gugulu is anti-inflammatory, so that we can give. But just to stop lactation, just to stop the formation, anything you have in your experience? In my experience, Varnadi Kashaya is very good, ma'am. Okay. Something to replace the this mensurin type injections of allopathic medicine. Sir, in Kerala, we are not giving any allopathic drugs. Yeah, I am not talking about the allopathic medicine to just to at par or alternative to that one. Yeah, we know that. We know, madam, that you are not using any modern medicine. Then there also such type of cases may happen. So in that cases, what is the practice at Kerala? Yeah, we have got galactolog at the same time just to cease the lactation. And in some patients they are using the leaves of cabbage leaf. Yeah, Okay. yes. That in north also they are using. That is good, ma'am. That is good. Yeah, to wrap up the Wrap up with the cabbage leaves. Yeah, that is here also practice, same practice. Yeah. Hmm. And also we are using the jasmine with the cover with the jasmine paste, jasmine flowers. Okay. That is also good Okay. to reduce. That is new thing, jasmine flower paste. Cabbage wrapping, It's have very seen lot common, of man. cases. Yeah, it Very, is very common. very common Yeah. in Kerala. Jasmine cover with the jasmine flowers. Okay. नहीं तो हमने पूछ लिया, कोई और अपना क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, अपनी तरफ से कोई ऐड ऑन करना चाहे, क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम आमिर सर को परेशान करते, सर आप बोल दीजिए। सर को पकड़ते हैं फिर हम लास्ट में। हेलो, आवाज आ रही है ना? जी सर बिल्कुल आ रही है। आप बाहर है कहीं क्या? हाँ, मैं ट्रेन में चल रहा हूँ। थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ जी। एक्चुअली मैम ने जो चीजें बताई, जैसे अपामार्ग बताया, द्रोण पुष्प भी बताई, और उसके बाद में प्रश्नपर्णी सालपर्णी बताया, इसी तरह से और मेडिसिन बताया। इसमें एक अपने वो भी था, साइरेक भी था। तो इनके जो नाम भले अलग हैं, मगर कुछ मेडिसिन अपने रेगुलर, जैसे अपामार्ग है, जैसे बताया मैम ने, द्रोण पुष्प भी बताई। तो इनके नाम भले उन्होंने अलग अलग बताए हैं, मगर हम लोग जो यूज करते हैं तो एक ही मेडिसिन सभी जगह यूज नहीं करते हैं। हाँ, एक विशेषता जरूर है, जैसा मैंने उस दिन भी कहा था, देश, कुल और आत्म के अनुसार प्लस वृद्ध स्त्रियां जो बताती हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि केरला अपने जो है वो अपने आनूप देश के अंदर आता है, या औदक देश तो बिल्कुल नजदीक होता है, पानी होता है, उसको कहते हैं। आनूप देश के अंदर आता है, तो वहाँ की क्लाइमेट को देखते हुए वहाँ की चिकित्सा अलग है, और हम लोगों के जैसे अलग अलग क्लाइमेट होता है। वही अपने वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में चले जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो मोस्टली एक चीज विशेष मैंने देखा, मैम ने जो बताया कि वहाँ पे कांजी का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। तो निश्चित ही कांजी का जो प्रयोग है वो अपने अम्ल होने की वजह से, उष्ण होने की वजह से, तो जो अपने एम है यूट्राइन इन्वोल्यूशन का और गर्भाशय शोधन का, वो उससे हल होता है। गर्भाशय शोधन का मतलब ही ये है, लोगिया रबरा, लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्वा, इन तीनों का जो इन्वोल्यूशन होता है उसमें गर्भाशय शोधन के लिए जो मेडिसिन यूज करती हैं उसमें कांजी का प्रयोग किया जाता है। मोस्टली उन्होंने उस दिन भी अपने केरला से बात आई थी,
आज भी आई, पलांडू का प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं। तो पलांडू भी वही काम करती है, उसमें तीक्ष्ण है, सर है, मगर मधुर विपाक है। तो मधुर विपाक होने की वजह से बात का समन भी करती है और गौरव का शोधन भी करती है। तो मेडिसिन होगी वही है, और निश्चित ही उनका जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा अंदर अलग है। कुछ मेडिसिन ज्यादा डाल के किया जाता है, हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं वो पंचकोल और अपने गुड़ का प्रयोग करते हैं। अजवाइन है, जीरा है, जीरे का उन्होंने भी डाला है, जीरा है, अजवाइन है, पंचकूल है और मेथी का, और अपने इनका प्रयोग ज्यादा करते हैं, उसमें गुड़ के अंदर ही देते हैं। और वहां पर जैसे कि उसका प्रयोग किया है उन्होंने, नारिकेल मिल्क का, उसमें कोकोनट मिल्क, उसकी जगह पे हम लोग गरी का प्रयोग करते हैं। गरी यानी उसके ही कोकोनट की गरी का उनको महिलाओं को अपने मेवा के रूप में देते हैं। तो लगभग वो की वही है, आचार्यों ने जो कही मेडिसिन, देश के अनुसार, काल के अनुसार पाक की व्यवस्था अलग बढ़ गई है। जो गॉट सूप बताया था, गॉट सूप हो के मेरे ख्याल से वो मीट सूप होना चाहिए, गॉट का सूप नहीं होता। तो मीट सूप गॉड का भी है, रेबिट का भी कहीं है, कहीं कहीं लावा का भी बताया गया है, लावा कपिंजल, इनका लघु होने की वजह से सूटका के अंदर बहुत अच्छा माना जाता है। मगर आजकल लावा है, कपिंजल है, ये अपने प्रोहिबिटेड है। तो आज के जमाने में एक अपने हैन है, अपने मुर्गा है, यानी अपने चिकन, और उसके बाद में मीट सूप अपने दिया जा सकता है, मगर उसको भी संस्कृत करके दें। एक चीज और बताई थी मैम ने, कि जो नोजिया और वॉमिटिंग जिसके अंदर होती है, वहाँ पे लाजा का दिया है प्रयोग। तो लाजा का प्रयोग हम लोग भी करते हैं ना, नोजिया वॉमिटिंग जहाँ पर होता है। इसी तरह से दाड़िमात घृत का प्रयोग होता है, दाड़िम का भी प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अलग अलग मेडिसिन का पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए उसका प्रयोग करते हैं। एक बात आई थी स्तन्य के लिए, अगर किसी का बच्चा खत्म हो गया उसके लिए क्या दिया जाए, तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं मोस्टली, वो देते हैं कच्चे केले की अपने सब्जी बना के देते हैं। अब वो कैसे काम करती है ये तो नहीं पता, मगर मेरा ऐसा मानना है कसाय रस होने की वजह से और स्तन्य के विपरीत होने की वजह से, रुख कसाय और कच्चा केला रुक्ष होता है, पका हुआ मृदु हो जाता है, मधुर हो जाता है। तो शायद उस तरह से काम करता है। एक देते हैं कपित्त, कैथ जिसको कहते हैं, वो अम्ल है और कसाय है, उसका भी प्रयोग महिलाएं करती हैं। तो इस तरह से कपित्त और कच्चे केले की सब्जी जिनके स्तन्य को खत्म करना है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। और कई मेडिसिन है अभी इस तरह से चल रहे हैं, तो माइंड में नहीं है, तो उसका प्रयोग जो है निश्चित ही करते हैं। लोकल भी प्रयोग करते हैं, अगर मेस्टाइटिस होता है, अगर फीडिंग नहीं हो रही है और मेस्टाइटिस होता है, तो लोकल प्रयोग भी किया जाता है, जैसा मैं हमने बताया, 10 आंगले का प्रयोग करते हैं। और कई जगह अपने गुग्गुलू का भी प्रयोग करते हैं, गुग्गुलू भी स्तन्य को रोकने वाली है, स्तन्य वर्धक न होने की वजह से उसका प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के हम लोगों का जो भी सिद्धांत है, उस सिद्धांत को देखते हुए योग रत्नाकर ने, सारंगधर ने और काश्यप ने जो चीजें कही गई हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हुए, चरक संहिता को तो लेना ही है, संस्कृत को भागवत तो लेना ही है, मगर योग रत्नाकर और सारंगधर ने जो कही है उनका भी इन्वॉल्व लेना है। और मेडिसिन वही है, कैसे भी घुमा करा के दे दें, प्रिपरेशन अलग अलग कर सकते हैं और कुछ थोड़ी सी इंग्रीडियंट चेंज कर सकते हैं, इस तरह से अपने उसका प्रयोग करते हैं। तो निश्चित ही बहुत अच्छी चर्चा रहती है, कुछ न कुछ सीखने मिलता है। मैम ने जो चीजें बताई वहां से भी हम लोगों का अपने एक ज्ञान प्राप्ति होती है कि वहाँ क्या प्रयोग करते हैं और हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, उसको किस तरह से योग किया जा सकता है, तो अच्छी रहा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जी थैंक यू सर। और जैसे आपने बोला, हम नॉर्थ ईस्ट में भी जो पंजीरी वगैरह बनाते हैं, है ना, जी जी वो जो डिलीवरी के बाद बनाते हैं, उसमें भी यही सब रहता है ना, गोंद और ड्राई फ्रूट, सूंठी, ये सब यही डाल के तो बनाते हैं वहाँ भी, है ना, नॉर्थ। तो टेस्ट वही है बस। हम्म। और यही मेडिसिन है। लगभग कोई रहती है, एक दो मेडिसिन इधर से उधर मिला दे, तो पंचकुल तो देना ही है, पंचकुल तो देना ही है उसमें, और गुड़ देना ही है, अजवाइन देना ही है, जीरा देना ही है, सब जगह लगभग लगभग यही देते हैं। हम लोग इसको हमारे यहाँ अहीरा बोलते हैं। और गुड़ के हाँ उसके हाँ बाद, हाँ, हीरा बोलते हैं, हाँ, सही, ठीक है। इसके 21 दिन के बाद में फिर लड्डू बना देते हैं, गोंद के लड्डू बनाते हैं, जो पौष्टिक का काम करते हैं, स्तन निवर्धक होता है, उनका प्रयोग किया जाता हाँ 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 है। हाँ। जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, मैम को बधाई, दीना मैम को। जी थैंक यू। मैडम को बहुत दिन से हम बोल रहे थे, मैडम आपका टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। मैडम का हाँ, टाइम मिल गया और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा मैडम का। बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
पुष्पा मैडम, आप कुछ बोलेंगे? डॉक्टर पुष्पा? डॉक्टर पुष्पा? डॉक्टर अंजलि? अंजलि जी वर्मा? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। एक्चुअली मैम ये जो वो वाला टॉपिक है जिसमें कि ये बोल रहे हैं कि स्तन क्षय के लिए क्या ड्रग्स हो सकती हैं, तो मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं याद आ रहा है अभी। चरक संहिता का कहीं पर तो है जहाँ पे कि वो जब क्षीर जनन की बात कर रहे हैं तो वहां पे उन्होंने कुछ ड्रग्स मेंशन किए हैं या कुछ प्रिपरेशंस हैं जिनको कि उन्होंने मना निषेध किया है उसमें, जिसमें कि एक है कि सिद्धू को छोड़कर, मुझे उसके प्रकरण में तो याद आ रहा है कि सिद्धू को छोड़कर और चीजें नहीं लेनी है, मतलब जो मध्य को सूतिका के लिए बताया गया है, तो जैसे हम आशा वरिष्ठ के फॉर्म में उनको देते हैं तो उसमें वहां सिद्धू को निषेध किया है। अब वो एक्चुअली सिद्धू क्या है या उसकी कुछ प्रिपरेशन? मध्याह्न शीध वर्ज्यानि, आ, स्तनी जनन में लिखा है मध्याह्न सभी मध्य शीत जननक होते हैं, शीध वर्ज्यानि, शीधु को छोड़ के। तो शीधु उसी का सिद्धू को प्रकार है। छोड़कर तो सर उसका ना हाँ निषेध बताया गया है जी हाँ, शीधु का निषेध सूतिका बताया, के तो लिए। शीधु का प्रयोग किया जा सकता है यहाँ पे खत्म करने के लिए। हाँ, तो वो ड्रग्स हम ले सकते हैं, जैसे स्तंभनीय जो ड्रग्स हैं, या जैसे हम स्तन बढ़ाने के लिए हम भ्रंगणीय ड्रग्स दे रहे हैं, तो हम क्या उसके अपोजिट वाली ड्रग्स लेकर और इस प्रिपरेशन के फॉर्म में उसको ले सकते हैं? तो एक्चुअली पर डाउट ये है कि वो सिद्धू क्या है, कौन सी प्रिपरेशन को में काउंट करेंगे हम उसको। तो मैं जनरली इसमें क्या करती हूँ कि जो जैसे हमारी स्तंभनीय ड्रग्स हैं तो उनको दे देती हूँ कि हाँ स्तंभन का जो कार्य कर रही हैं उनको दिया है ड्रग्स को, और बाकी वही जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उस समय बाकी पेशेंट को वही बताते हैं कि टाइमली उसको मिल्क का इंजेक्शन करवाना है आर्टिफिशियली, और उसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए जो ड्रग्स हो सकती हैं उस समय वो देते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी वही है, इसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन और इतना ज्यादा नहीं है, पर फिर भी इस विषय में सोचा जा सकता है इस तरह से कि जो चीजें निषेध है सूतिका को शायद वो इसके लिए अब काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, या हाँ इस तरह से सोच सकते हैं, है ना, कि अगर वो स्तन्य वृद्धि नहीं कर रहा है, नहीं देना है, जो स्तन्यपान कर रही है नहीं देना है, हाँ मतलब जी नुकसान मैम। करेगा, है ना, उसको रोकेगा, तो हाँ, वही देकर कि उसको रोकने के लिए भी इफेक्ट हो सकता है। जैसे हाँ मैम इसमें बिल्कुल। एक हाँ। लेखनीय महाकषाय जो हमारा चलता है तो उसमें जो ड्रग्स हैं तो जैसे चित्रक है या ये ऐसी ड्रग्स हैं, हालांकि वो दीपनीय भी है, पर अगर वो लेखन का कार्य कर रही हैं तो वो भ्रंगण के अपोजिट है, तो शायद वो उसमें काम करें। तो ऐसे सोच सकते हैं जैसे मैम, मतलब ये तो सूतिका से अलग टॉपिक चला जाएगा, पर जैसे प्रोलैक्टिन जहाँ बड़ा होता है इन जनरल जिन पेशेंट्स में हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में, तो अगर जहाँ प्रोलैक्टिन बड़ा है तो हम वहाँ उसको ठीक करने के लिए जनरली स्तनीय शोधन महाकषाय की ओर सोचते हैं, और तो ऐसे ही अप्रोच रख के हम स्तन्य क्षय के लिए उसको कर सकते हैं कि जो स्तन्य जनन के अपोजिट है, तो जो उसके गुणों के विपरीत हो उन ड्रग्स को हम इम्प्लीमेंट करके देखें वहां पे, आई थिंक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, करना चाहिए ऐसा ना, मतलब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मैडम बहुत सारी वहाँ की एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, तो वहाँ उनके यहाँ कोई ऐसा अलग कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस या कुछ वहाँ ये लोग प्योर हाँ, आयुर्वेद करते हैं, हाँ जी मॉडर्न मैम। नहीं यूज करते हैं, तो कोई ऐसा इनके मतलब केसेस तो हर जगह होते ही है ना ऐसा, हाँ तो जी क्या मैम। ऐसा कोई एक्सपीरियंस उनका है क्या, वो हम उनसे पूछ रहे थे कि आप कुछ शेयर करिए अगर आपका व्यू है इसमें, तो हाँ जी उससे मैम। उस रेफरेंस से बात चल रही थी, ये ना, है ना। हाँ जी हाँ मैम। हाँ। बाकी मैम वो ये कलेक्शन बहुत अच्छा था ड्रग्स का, बहुत सारी मैम ने प्रिपरेशंस और वेरियस जो ड्रग्स बताई उसमें बहुत सारी मेडिसिन्स थी,
हालांकि उनको वो संस्कृत नाम नहीं लिखा था, तो कई बार फिगर देखकर हम अंदाजा लगा रहे थे कि हाँ ये वाला प्लांट है, हाँ क्योंकि हाँ हाँ हाँ। पर वो हम्म। वही सर ने बताया कि वो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो नोन है हमारी तरफ की भी हैं, वो कॉमनली यूज होती हैं वहां भी यहाँ भी। कुछ एक ड्रग्स मुझे लगी जो हाँ हम नहीं जानते हैं, एक्चुअल नेम तो भी मुझे भी नहीं याद है उनमें से कौन सी थी, पर हाँ वो जानना चाहेंगे कि क्या है वो ड्रग्स एक्चुअली में, क्योंकि वो हम लोग हाँ संस्कृत नेम नहीं मेंशन थे, तो आई थिंक संस्कृत नेम तो कॉमन ही होते हैं हर जगह पे, तो वो दूसरा चीज रहती। इसमें दूसरी इसमें ये भी बात है ना, अवेलेबिलिटी की बात भी हो जाती है ना कि हाँ जी मैम। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया ये हम्म। प्लांट वहाँ कॉमनली अवेलेबल होता है। हाँ अकॉर्डिंग जी मैम। टू हाँ वेदर एंड जियोग्राफिकल कंडीशन कुछ प्लांट्स किसी एरिया में ज्यादा अवेलेबल होते हैं, तो जहाँ जी जो मैम। चीज ज्यादा अवेलेबल होती है वो प्रैक्टिस में आ जाती है कि ठीक है ये इजीली अवेलेबल है, इसको हम इसमें यूज कर लेते हैं, तो फिर वहां जी चल जाता है। जैसे सुतिका में वैसे भी बोला है ना, देश काल और कुल के हिसाब से जो है सुतिका परिचर्या होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल वहां की जो है क्लाइमेट के हिसाब से इजीली अवेलेबल चीजें हैं तो वो यूज भी हो जाती है। यहाँ अगर वही प्लांट आप ढूंढेंगे तो कई बार नहीं मिलता है ना, हाँ तो जी मैम वो बिल्कुल, बात वो थी। बिल्कुल वेजिटेशन बिल्कुल चेंज है नॉर्थ से साउथ की, हाँ बिल्कुल। हाँ 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 मतलब जनरली जो प्लांट्स वहां मिलते हैं वो हमें जनरली यहाँ नहीं दिख रहे होते हैं, ऐसा हाँ। होता है भी। तो अब वही जैसे तो। ये कोकोनट मिल्क है, तो हम लोगों के यहाँ तो जनरली जैगरी और वो सरसों तेल बहुत यूज किया जाता है, जैसे मैम हमारे साइड, और घी को दस मिला मूल के सरसों। अब तो 10 मूल भी नहीं मिलता है ना, 10 मूल यूज कर रहे हैं, कहाँ मिल जी रहा सर। है। जी सर। हाँ वही वही बात है ना कि 10 मूल अवेलेबिलिटी भी का जाने वही। क्या यूज कर रहे हैं पता ही नहीं। हाँ। सही। मूल तो खैर मूल तो अभी नहीं, कभी भी यूज होता है, कई सालों से कांड ही यूज होते हैं, बट अभी हाँ, कांड भी अवेलेबल है कि नहीं वो भी हुआ। हाँ। Yeah, ma'am, available. That is the main thing, the availability of the drugs. यस yes, यस yes. यस, दैट Which is दैट इज easily available, that is But, but that is the use. drugs available in their place for the boiled water and for making porridge, and that is the available drugs. That is the concept. yes, that is the thing that there you are having lot many plants available, Yeah. easily available, but here those plants are not very much easily available, so we cannot use. We know about that, but it is not in practice due to non availability. हम्म। Yes. एक मैम जो बटर मिल्क वाला कॉन्सेप्ट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है वो जो कांजी की प्रिपरेशन या जो भी वो बटर मिल्क के साथ बता रहे हैं, तो मे बी वो एज अ प्रीबायोटिक भी वर्क कर रहा है, उसका दीपन पाचन भी हो रहा है, और अगर रस धातु की पुष्टि होगी और उसके साथ वो ड्रग्स हम दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स स्तन भी अच्छा बनेगा वहां हाँ पे। वो तो होता है, बट नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस थोड़ा डिफरेंट, इसलिए कि नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट ठंडा रहता वेदर बिल्कुल डिफरेंट है। है, हम्म। ठंडा रहता है। तो Across वहां हाँ पर जी। तो ट्रेडिशन में ही वो सुतिका को छाछ देंगे ही नहीं, मना करेंगे कि नहीं ठंडा, ठंडा नहीं नहीं देंगे नहीं हम, देते हैं, ये हाँ जी हाँ मैम, वात यहाँ तो बढ़ेगा, ये जस्ट होगा। अपोजिट है, हाँ। हाँ तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वो बुजुर्ग लोग ही मना करेंगे कि नहीं हम छाछ नहीं देंगे इसको, अभी मैम नहीं पीने कांजी देंगे, यूज कर सकते हैं इसमें हम लोग। है ना। मतलब मैम वही बोलते कांजी। हैं कि हाँ। all climate we can use the buttermilk, ma'am. Sakra lekhu kashayamlam deepanam kapavadajit. Yeah, we can Yeah. use, but in we can say that in home, our elders will not allow. That is a question. They will not allow that we cannot give buttermilk to that lady and this and this. That is traditional practice of North. They will not allow. Yeah. एक्चुअली मैम एक ये टैबू होता है कि जो मदर ने खाया है, अगर बच्चे को एक छींक भी आती है तो वो सारा कुछ होता है कि आपने ये खाया था, डेट्स वाई उसको ऐसा हुआ है। तो हाँ वो अभी तो इसको होता ही है। साइंटिफिकली तो प्रूवन नहीं कर सकते, बट इस चीज का मेंटल इफेक्ट पेशेंट की हेल्थ पे बहुत ज्यादा होता है। तो नहीं हो, वो इफेक्ट तो आता ही है ना, वो तो आता ही है, वो तो हमने देखा भी है, और उसमें बोला भी है कि अगर आपने शिशु को कोई व्याधि होता है तो माता को मेडिसिन दे दो तो वो उसको असर करेगी, है ना। बोला तो है, देते भी हैं ऐसे कि हाँ तुम ले लो तो उसको असर होगी, जो 100% मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंट है बच्चे, तो वहां देते भी हैं ऐसे मेडिसिन मदर को।
तो आता है, इफेक्ट तो आता ही है, वो हमने देखा भी है कि कॉन्स्टिपेशन है बेबी को तो मदर को हरी तकी खिला दो और वही दूध बच्चे पिएगा तो उसका पेट ठीक हो जाएगा, है ना। वो जी देते ही हैं हम लोग इससे। जी मैम। हाँ, तो इफेक्ट तो आता है, वो तो बात है ना। अब दूसरा ये है कि अब जो टाइम चल गया कि डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस एविडेंस, तो इतना तो कभी हम इतने सालों से किसी ने नहीं किया। अभी जो भी आपकी प्रैक्टिस है तो उसको लिखना लिखना लिखना, ऐसा तो कोई नहीं करता था ना वैसे भी, है ना। तो वो है, लेकिन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस तो बहुत सारी चीजें हैं जो करते हैं लोग और देते भी हैं और इफेक्ट भी मिलता है ना। जी बाकी अगर डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस की बात करें तो उसके लिए तो फिर रिसर्च एंड बजट वाला इशू रहता ही रहता है। हाँ, वो है। बाकी थैंक यू बीना मैम को भी, मैं उनसे अय्या में मिली थी जब आए थे एक सिंपोजियम में 2017 हाँ, मैं, शायद हाँ, मैम आप को। लोग सब उत्तर बस्ती वाले में आए थे। हाँ। हाँ जी मैम। हाँ, तो वो वाले टाइम में मुझे याद है, बहुत हम्बल है मैम और बहुत बहुत पोलाइटली हम्बल है, बहुत। बहुत ज्यादा है। इतना धीरे थैंक यू। बोलती है, आज ही मैंने उनकी आवाज इतनी प्रॉपर ऐसे सुनी है अच्छे से, नहीं तो बहुत धीरे से बोलती है मैडम। वही है तो। थैंक यू मैडम फॉर सच इंफॉर्मेटिव सेशन। और जो भी आपने ड्रग्स बताई हमारे लिए कुछ जानी पहचानी, कुछ थोड़ा सा रिलेट कर पाए हम भी कि हम और क्या नया कर सकते हैं इसमें। तो थैंक यू वेरी मच मैम। Agnihotri sir, now we can wind up this session with your Okay, concluding okay. remarks. Yes, sir. Thank Okay, you. thank Thank you, you. Kamini ji. Thank you very much. And I would like to communicate my regards to Dr. Beena ji also. Excellent presentation. Very nice. Excellent presentation. आप जुड़ते रहिएगा मैडम. And please subscribe all of the audience. I would like to request to please subscribe the YouTube channel so get more information on our Ayush and Ayurveda. आपको मालूम नहीं होगा, इनके हस्बैंड को आप मिले होंगे, उदय जी जो है NCSM CCM में काफी बड़े उसमें रह चुके हैं, पोस्ट पे। डॉक्टर उदय, अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल जय हो. हाँ हाँ, उनकी वाइफ है बीना मैडम। जय हो जय हो. वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा. अभी और कोई क्वेश्चन आंसर होंगे क्या? नहीं सर, अभी टाइम हो चला आपके सेकंड सेशन का। ठीक है. अग्निहोत्री काइंडली कर. Thank you, Professor Sharma ji. Thank you, Professor Kamini ji. Thank you, Professor Veena Rose ji. बहुत अच्छा session. It was a really knowledge-oriented session. Of course, there were a few drugs which were spelled by the local name and mentioned in the text during presentation. Of course, there is some sort of tradition in Nagarjun pharmaceuticals also. They put their local names and then Latin names. So sometimes it becomes difficult for us to know the proper name in Hindi or in Sanskrit. Anyway, we were also having some talk over the cessation of lactation during some unfortunate situation. And for that, what the result came is we can proceed Hetu Viparitaarthkari means approach to the Hetu which are responsible to increase the lactation. तो उसमें करेंगे जैसे स्तन्य क्षय का काम पूरा हो जाएगा. एक और चर्चा हरीरा और पंजीरी की आई. ऑफ कोर्स बेसिक्स जो हरीरा पंजीरी के होते थे, ऑलमोस्ट जितने भी आज की तारीख में हम लोग सब जिंदा हैं, हम लोग सब पैदा हुए हैं, निश्चित रूप से लगभग 99% इनके सबके सूतिका परिचर्या और इनकी जो प्रसूताएं रही हैं वो सबके सब हम लोगों की माताएं वगैरह श्रेष्ठतम स्वास्थ्य में रही थी. तभी उस जमाने में 2 3 4 तो हो ही जाते थे. अच्छी डिलीवरी, अच्छी